Welcome to StudyIQ. In today's video, we are going to discuss a landmark judgment of Honorable Supreme Court, that is Joseph Shine versus Union of India. So let's get started with that. सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स इस जजमेंट की हम देख लेते हैं। जो टाइटल है वो है जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। डेट ऑफ जजमेंट इज सितंबर 27, 2018। ये है जो भी लोग तो वहां पर इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि जो जोसेफ शाइन का जजमेंट है वो कितने जजेस का जो बेंच था उसमें बैठा था। सो 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठा था इसमें और उन्होंने ये जजमेंट दिया था। तो ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस नंबर ऑल्सो। इस जजमेंट का आउटकम है इसमें सेक्शन 497 जो अडल्ट्री के बारे में बात करता है एंड डिक्लेयर्स अडल्ट्री एज एन ऑफेंस, उसको सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज किया और कोर्ट हेल्ड दैट adultery from now on will not be an offense under Indian Penal Code. अब यहाँ तक कोर्ट कैसे पहुंची और किन किन फंडामेंटल राइट्स को कोर्ट ने कंसिडर किया एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स एक्चुअली कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड इट टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ओके, सो दैट सबसे पहले समझते हैं कि जो सेक्शन 497 है इंडियन पीनल कोड का वो क्या बात करता है। 497 सिंपल बात बोलता है। 497 कहता है इफ a man has any consensual sexual relationship with a married woman but without that woman's husband's consent, तो जो फर्स्ट पर्सन है he will be charged for adultery under section 497, right? आपको ये जो प्रोविजन है वो समझ में आई हो। इट सेज कि if say there's a husband and this wife has consensual sexual relationship with another person. Ab now this person can be a married person or unmarried person. इट डजेंट मैटर जिसके साथ भी वो कंसेंशुअल रिलेशनशिप में है उसका मैरिटल स्टेटस क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक मैरिड वुमन के साथ इफ अ पर्सन हैज कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप तो उस मैरिड वुमन का जो हस्बैंड है वो उस इंसान के ऊपर अडल्ट्री का केस कर सकता था अंडर सेक्शन 497 एंड विच वॉज ऑफकोर्स अ पनिशेबल ऑफेंस, जहां पर 5 साल तक की सजा हो सकती थी, फाइन या दोनों। द वुमन वाज नॉट कंसिडर्ड एन ऑफेंडर बट ट्रीटेड एज अ विक्टिम। सो इस पूरे सेक्शन में आप देखेंगे कि जो पर्सन है दिस यहाँ पर बात हो रही है कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप की, बट स्टिल ओनली द मैन वाज बीइंग पनिश्ड एंड द वुमन विद whom he is having that affair is not considered as an accused in this particular provision. अब ये 1860 से ये ऑफेंस चला आ रहा था, आईपीसी में डला हुआ था, तो इट वाज नॉट लाइक चैलेंज और प्रैक्टिस में था। काफी आप केसेस देख सकते थे कोर्ट्स में आते थे अंडर सेक्शन 497। फिर जो पिटिशनर है जोसेफ शाइन, उन्होंने एक पीआईएल फाइल किया जिसमें उन्होंने इस प्रोविजन को चैलेंज किया ऑन सेवरल ग्राउंड्स। और जो उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्राउंड था वो यही था कि दैट इट इज वेरी डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि कोर्ट ने क्या इश्यूज फ्रेम किए। कोर्ट ने सबसे पहले तो ये इशू फ्रेम किया कि क्या 497 एक्चुअली इक्वालिटी की जो हमारी राइट है एंड राइट टू डिग्निटी है उसको वायलेट करता है। कोर्ट ने ये इशू फ्रेम किया। दूसरा, कोर्ट ने ये इशू बनाया कि ये जो प्रोविजन है क्या ये ऑन द ग्राउंड्स ऑफ जेंडर। अब इसको समझने के लिए हमको यहाँ पर इस प्रोविजन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। पहली चीज तो ये है कि जो अंडर सेक्शन 497 फॉर अडल्ट्री वो सिर्फ मैन हो सकता है, अ वुमन कैन नॉट बी चार्ज्ड। तो भले ही शी वॉज इन अ कंसेंशुअल रिलेशनशिप विद दैट मैन, but still the charge will only be framed against or the man. He will only be the accused in the case. The woman will not be an accused under section 497 और वो offender नहीं होगी। So this was of course discriminatory. If two people, if you there is an offense and if two people are committing that offense, then both of them should be offenders and not only one person, and especially where the relationship was consensual. So the wife of the another man was in a consensual relationship, right? So in that situation, it was not fair and it was discriminatory that the woman was not punished for that particular act, which was an offense at that time, but only the other man was being punished for that. एक तो ये इस एंगल से डिस्क्रिमिनेटरी है। दूसरा, अगर आप देखेंगे
कि यहाँ पर बात हो रही है कि अगर वो अपने हस्बैंड के कंसेंट से अगर किसी कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप में है विद अदर मैन, देन इट इज नॉट एन ऑफेंस। सो हस्बैंड का कंसेंट को अगर हम देखें तो यहाँ पर दैट इज ऑल्सो अगेन वेरी डिस्क्रिमिनेटरी, दैट इफ हस्बैंड गिव्स कंसेंट देन इट इज नॉट अडल्ट्री। सो देयर वाज slight objectification of women, the wife, that if the husband, the offense of adultery is an offense because the husband is not giving consent. If he had given the consent, then of course it's not adultery, right? So that is also very discriminatory against women. Third perspective of discrimination, if you can observe, is that if there is a wife and her husband is having any consensual sexual relationship with any other woman, then that wife could not file a case under Section 497 for adultery. So, if from all these point of views, we can clearly see that it was a very discriminatory provision, right? The only man who was being punished was the other person, because uh, was in a consensual relationship with a person without his consent. If he had obtained the consent of the husband, then it was not adultery, right? And the wife who was in a consensual relationship was not punished, right? So from all these three angles, if we see that it was discriminatory, right? So in a way, it was only satisfying the uh, ego, or the only protecting the rights of the husband whose wife has entered into a consensual sexual relationship with another man, right? But what about the woman who is also in that relationship? She was not punished. Secondly, if he had given the consent, then it was not an offense. And thirdly, if there's a woman who's married and her husband enters into a consensual sexual relationship with any other woman, then that wife had no such provision where she could file a case and file for adultery. So, from all these angles, it was very discriminatory, and that is what court observed and court held after analyzing the whole provision with the Article 14, which talks about Article right to equality, Article 15, which talks about prohibition of discrimination on grounds of gender, and then Article 21, which talks about right to life and personal liberty. तो इन तीनों कोर्ट ने पढ़ा और जो प्रोविजन है उसको एनालाइज किया, एंड आफ्टर लुकिंग इन द कंबाइंड रीडिंग एंड ऑफ कोर्स आफ्टर हियरिंग ऑल द आर्ग्यूमेंट्स, कोर्ट केम टू द कंक्लूजन दैट इट इज नॉट the provision which we should continue with, और इसको हमें decriminalize करना चाहिए, and it was also declared to be unconstitutional. So now adultery is decriminalized. तो अब अगर ऐसा कोई situation create होता है where the wife is in a consensual sexual relationship with any other man, the husband cannot file a case, a criminal case against that man under section 497. So अब ये unconstitutional declare हो गया है by the Honorable Supreme Court. इट वाज अ यूनानिमस वर्डिक्ट। यूनानिमस वर्डिक्ट का मतलब होता है कि जो जितने भी जजेस हैं, पूरा जो 5 जजेस का बेंच था, वो सब इसी कंक्लूजन पे आए दैट इट इज अ डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन एंड इट शुड बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो एमसीक्यूज में इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है कि वो 4 आपको केसेस के ऑप्शंस दे देंगे और वो उसमें आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा जजमेंट था जिसमें यूनानिमस डिसीजन दिया था बाय द होल। अगर आप कोई जुडिशरी वगैरह के एग्जाम्स की तैयारी करो तो वहां पर आपको ये डिटेल्स भी याद रखनी पड़ेंगी, बिकॉज जुडिशरी इज ऑल अबाउट लॉ। देर इज नो वेरी लिटिल लाइक जीके पेपर कम इन लाइक फ्यू स्टेट्स, और उसमें भी बहुत कम कंटेंट होता है, बट मेजरली इट्स लॉ। और प्रीलिम्स में तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनते ही हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि जोसेफ शाइन का जो जजमेंट था उसमें जो वर्डिक्ट है वो एक यूनानिमस वर्डिक्ट है। की पॉइंट है, सेक्शन 497 वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्यों हुआ था ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो प्रोविजन थी वो हर एंगल से डिस्क्रिमिनेटरी थी। डिक्लेयर्ड एडल्ट्री अ प्राइवेट मैटर नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो कोर्ट ने ये भी बोला कि भाई ये प्राइवेट मैटर है, जो हस्बैंड वाइफ हैं दे हैव टू डिसाइड बिटवीन देमसेल्व्स, एंड इसमें स्टेट को इन्वॉल्व करना और प्रोसिक्यूट करवाना जो तो दैट वाज आल्सो डिक्लेयर्ड इकोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ मैरिड वुमेन। और यहाँ पे उन्होंने ये भी कंसिडर किया कि ऑफ कोर्स जो मैरिड वुमेन है शी इज एन इंडिपेंडेंट
person, and if she is in a consensual relationship with somebody else, so you cannot, sometimes husbands can also like threaten the other person ki I will sue you, or I'll file a criminal case against you under section 497, or and all those things, and a lot of blackmail could have happened, और ये सब हो भी रहा था. Of course कोई भी प्रोविजन होती है उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं इस तरीके की. जब भी जेंडर बेस्ड अगर हम ऑफेंसेस देखें तो वहां पर एक पोलराइजेशन हो जाती है, और वो इस प्रोविजन को लेकर भी हो रही थी. तो कोर्ट ने बोला कि ऑफ कोर्स मैरिड वुमन आल्सो हैज हर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, and emphasize the importance of privacy and dignity in personal relationships. And court held that जो matters हैं ये it is a private matter, it is a personal matter, and it should be resolved between the parties only, and there is no need to criminalize it and like give a way to file a case under criminal law and prosecute करे, क्योंकि इसको public matter बनाने की जरूरत नहीं. It's a private matter, and the parties can decide amongst themselves. इसका impact ये था that adultery decriminalized but retained as a ground for divorce. अगर आप देखेंगे adultery को, तो वो अब offense तो नहीं है, but it is still a ground of divorce. So if the husband or the wife they find that their spouses are having any kind of illicit relationships, so they cannot prosecute them under section 497 because now it is has declared to be unconstitutional, but they can file for divorce under this ground. So it's very much a ground of divorce, बट इट्स अवेलेबल टू बोथ द पार्टीज. तो हस्बैंड को भी अवेलेबल है, वाइफ को भी अवेलेबल है, अनलाइक 497 जहां पर सिर्फ हस्बैंड के पास राइट अवेलेबल था और वाइफ के पास कोई राइट नहीं होता था. राइट, तो ये एक ग्राउंड ऑफ डिवोर्स है अभी भी. Strengthen the constitutional principles of equality and personal liberty. Of course, it has actually strengthened the principles of equality because not only for women, actually for men as well, because the person who was being prosecuted was not the only offender. Right? There's another person involved in the offense, even if we call it as an offense, but only he was being charged and was punished. Right? So it was discriminatory not only against women but also against men. तो उसको कोर्ट ने समझा, फ्रेम किया, और उसको उन्होंने रिजॉल्व किया इन दिस पर्टिकुलर जजमेंट. सिग्निफिकेंस है मार्क्ड एज प्रोग्रेसिव स्टेप इन रिकॉग्नाइजिंग जेंडर इक्वालिटी एंड इंडिविजुअल ऑटोनॉमी. तो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी भी यहाँ पर रिकॉग्नाइज हुई है बिकॉज एवरी इंडिविजुअल, यू आर मैरिड एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट द सैंक्टिटी ऑफ इट एंड the commitment you have made, but you cannot be blackmailed into doing that, right? And especially under the fear that you can be prosecuted. But of course, the wives were not prosecuted; only the person they were in relationship were being prosecuted. But there is a lot of pressure, and also there is a lot of objectification because the woman could enter into an illicit relationship with another man if she had her husband's consent. Then it was not adultery, right? So there was objectification of women as well in under this provision. So, after considering all these things, Honorable Supreme Court came to the conclusion that it is a discriminatory provision and it is unconstitutional. So now, present status is that adultery is not an offense; it is only a ground of divorce under Hindu Marriage Act, right? So, this मैंने बहुत कम टाइम में कोशिश की है फॉर टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस जजमेंट, कि आपको क्रक्स पता हो, प्रोविजन पता हो, बिकॉज इट्स अ सीरीज वेयर आई डोंट वांट टू टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड एक्सप्लेन द होल जजमेंट एंड ब्रिंग पीडीएफ हियर. आई जस्ट वांट यू टू नो द क्रक्स ऑफ इट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, एंड आई टेल यू वेर एवर यू नीड टू लर्न द फैक्ट्स, राइट? सो जैसे मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, यूनानिमस डिसीजन था, जजमेंट का नाम, इट्स 2018 जजमेंट. What all articles were considered by the Honorable Supreme Court. इन सब पॉइंट्स पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसीलिए मैंने इनको पॉइंट आउट भी किया है. So this was my way of explaining it to you. Thank you for watching.